Each year, there are nearly 500,000 new cases of rifampicin and multidrug-resistant tuberculosis. We call this MDR-TB, which is defined as disease caused by TB bacterium, which is resistant to rifampicin, the most effective of the first-line antibiotics, with or without resistance to another important drug, isoniazid. In the last 5 years, only 31% of all these cases have been treated, and less than 15% have actually been cured. For some patients, MDR-TB treatment is long, up to 24 months. It includes thousands of pills, may require painful daily injections, and has frequent side effects. Moreover, guidelines on the treatment of MDR-TB rely on very low certainty of evidence. In partnership with Médecins Sans Frontières, Partners in Health, Interactive Research and Development, the UNITAID-funded clinical trial was launched in 2017 to address the problem. The endTB clinical trial used the first anti-TB drugs developed in almost 50 years, bedaquiline and delamanid, to find shorter, tolerable, injection-free treatments for people affected by rifampin-resistant TB. The endTB clinical trial is a randomized, controlled phase 3 trial that tested 5 new, all-oral, 9-month regimens compared to the local standard of care according to WHO guidelines. The endTB clinical trial enrolled 754 patients across 7 countries: Georgia, India, Kazakhstan, Lesotho, Pakistan, Peru, and South Africa. The endTB clinical trial picked up where the pharmaceutical industry had left off in its development of bedaquiline and delamanid. That's why the UNITAID funding and this partnership among non-governmental organizations was so important. खांसी बहुत डेंजर आ रही थी, मतलब पूरा मेरा ये छाती वगैरह दर्द कर रहा था। सब स्पूटम वगैरह चेक किया तो उसमें पता चला कि ये एमडीआर निकला है करके। और क्या हुआ था सर, मेरी एक बहन है, वो ना टीबी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, मतलब 3-4 महीने पहले, और उसके बाद मुझे भी डिटेक्ट हुआ। उस वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसा होता है तो मैं रहूँगी कि नहीं, मेरी बेटी का क्या होगा। वो धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है अंदर से, तो आपके ना बॉडी को बहुत इफेक्ट होता है। आप अगर एजुकेशन कर रहे हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, तो आपको ये सब मैनेज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें टैबलेट्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अगर आप बेडाक्विलिन और डेलामिनाइड लोगे और 2 साल का अगर प्रोसेस है, तो आपको वो आपका सब पीछे छूट जाएगा, आपकी लाइफ पीछे छूट जाएगी उसमें। और फिर हम यहाँ पे आए औंध में, पुणे में, उनकी टीम मिली, उन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया। स्टडी वो स्टार्ट करने वाले हैं कि उनके टैबलेट्स जो भी है बेडाक्विलिन और डेलामिनेट, उनका वो स्टडी स्टार्ट करने वाले। अगर हमें स्टडी में अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, तो आने वाला टाइम बदलने के लिए। 6 years later, we're excited to share the endTB clinical trial results. They provide evidence for 4 all-oral shortened regimens for rifampin-resistant TB. 3 of them have robust evidence for nearly every patient, and 1 is an alternative for patients unable to receive other recommended treatments. The results offer patient-centered treatment options and empower clinicians to tailor drug regimens based on individual patient characteristics and conditions, thereby aligning treatment with patient preferences for a more personalized approach to care. क्योंकि ये यूथ के लिए और आगे के लिए बहुत बहुत काम आएगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज अ साइंस स्टूडेंट मैं साइंस से हूँ। ये बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। Trial results provide new treatment options for all patients, adults, adolescents, children, and pregnant people. endTB shows excellent results in a population with severe disease and with a high prevalence of important comorbidities, such as diabetes and infection with HIV and viral hepatitis B and C. It also offers alternatives in case of drug intolerances or other contraindications, drug-drug interactions, drug resistance, or lack of drug availability. Following these exciting findings, allowing additional safer and shorter treatments for MDR-TB, the next step is making sure people can actually access them. That means governments and providers need to be able to afford them. We'll continue to advocate for lower prices for rifampin-resistant TB treatment and diagnosis.
Today, we finally have 5 new all-oral, shorter, patient-friendly MDR-TB regimens, which can be composed with a formulary of only 8 drugs. The results of endTB, together with other recent clinical trials, have completely transformed the landscape of MDR-TB treatment and the evidence underlying it.